Assalamu alaikum and welcome to Thursday Talk. On today's episode, we are going to have a little chit chat on inspired inclusion. Since you all know that Women's Day is around the corner, it's on 8th of March 2024, and this year's international theme is hashtag inspire inclusion. So, Aisha, since you're talking about it right now, okay, ये किसकी responsibility है to inspire inclusion, right? Is it a responsibility of an organization or an individual or a family support system and all of that? बहुत दफ़ा एंड आई थिंक प्रीवियस वुमेंस डे की अगर आप देखें और पूरा ट्रजेक्टरी देखें सो इट्स अ लॉट अबाउट गिविंग देम द प्लेटफॉर्म राइट एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक वी काइंड ऑफ समवेयर अभी भी खैर बहुत काम रहता है इसमें लेकिन वी अचीव्ड अ स्पेस वेयर वी हैव बीन एबल टू क्रिएट प्लेटफॉर्म्स आवाज़ उठाने की आपको एक प्लेटफॉर्म भी मिला है आपको इजाज़त भी मिली है मुख्तलिफ पॉलिसीज़ भी आई हैं बहुत कुछ आई थिंक है which is available to not just women, but just generally people that are working within organizations, working within different communities. But I think जहाँ पे बात आती है ना कि inspiring inclusion, that is largely a collective responsibility. So इसमें आपने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दे दिया मतलब हम लोग कहते हैं ना DEIB, तो आपने सिर्फ diversity तक आप रहे हैं आपने ई को नहीं एक्सप्लोर किया आई को नहीं एक्सप्लोर किया और बी को नहीं एक्सप्लोर किया सो उसमें जिम्मेदारी हम सब की है एंड आई थिंक दिस वुमेंस डे the idea is to take that responsibility for ourselves. So for example there are different organizations जिनके platforms हैं that have to do with mental health awareness, right? And उसमें आपके पास therapists भी हैं in house मुख्तलिफ और लोग भी हैं लेकिन do we really go out there and avail those services, right? Because if you're not availing it, तो फिर तो बात वहाँ पे ही ख़त्म हो गई ना तो फिर इतना कुछ किया क्यों जा रहा है and the idea is कि how do you take that responsibility yourself? I think that's what this year's theme is also somewhere alluding to. Okay, so when it comes to inclusion, it's not only women, it includes so many other people who are from diverse backgrounds, diverse anything, right? So what can we do on our part to be included? I think Farah, we were having this conversation today and you spoke a lot about the community work that you do, right? Yeah. And I think इसमें intrinsically हमें ये देखना है कि what are our motivators to do what we do. So for example, if I get involved in doing something for a particular community, then मैं क्यों वो काम कर रही हूँ, right? So उसके पीछे because a lot of us we don't हम लोग कहते हैं ना कि one of our motivators strongest motivators is कि हमें पैसा बनाना है so while yes of course ये तमाम लोगों की एक baseline requirement है what can be done in order to make sure that more and more people get excited by this idea because अभी तक I feel like even today it is just something that we celebrate but what do we really take out from it and what can we do as a motivating factor so that people get encouraged to take part in such activities. So on Saturday, I went to this event, which was organized by State Bank of Pakistan, collaboration with AQU and Economic Planning Board. So they were talking about financial literacy and how it's important for women, and it is very important. Usually, हमारा ये होता है कि we rely a lot on the men of the family when it comes to finances. कि हाँ मेरे अब्बू जो है ना वो कर लेंगे और उनको इन्वेस्टमेंट का पता है उनको पता है कि सेविंग करनी है वगैरह वगैरह यूजुअली ऐसा ही होता है कि आई थिंक अबाउट कि अच्छा थोड़े से मैंने पैसे बचा लिए आउटिंग कर ली शॉपिंग कर ली वगैरह वगैरह इन्वेस्टमेंट नहीं आता दिमाग में राइट सो इसके अलावा जो बहुत सारी ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो बहुत सारे ऐसे मौक़े फराहम कर रहे हैं ख़वातीन को कि वो आएँ और वो फाइनेंशियल इकोसिस्टम का पार्ट बने राइट नाउ हम वुमेंस डे में वी आर लॉन्चिंग 2 of our programs जिनका अगेन मोटिव भी यही है ऑब्जेक्टिव भी यही है टू अगेन एजुकेट एंड टू प्रोवाइड दिस अवेयरनेस एंड ऑल्सो to provide them the strategies and tools to speak up for themselves, to be self-aware enough to think about all of these dimensions of their lives. So all I think we can do is कि अपने आप को empower करें. Again, empower is a very cliche word, but it has to be it. कि आप अपने आप को देखिए आप कहाँ stand कर रहे हैं फिर आप दूसरों की help करें कि वो कहाँ stand कर रहे हैं उनको ऊपर लेके आएं. लेकिन it's not just about the financial empowerment. That is one aspect. So for example, मैं खुद से बहुत motivated हूँ. But कहीं ना कहीं in the environment that I am placed into,
कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें भी अगर अपना इतना दिमाग लगाऊंगी तो कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल ही बॉग डाउन हो जाऊंगी. तो what should be the motivating factor for me in that regard so that I can truly thrive, so that I can, and I feel like I'm willing to do that also. सो अगेन वही बात है ना कि आप क्यों कर रहे हैं वो. तो आप अपने आप से पूछें कि मैं क्यों कर रही हूँ. तो व्हेन यू नो द व्हाई देन इट विल मोटिवेट यू. व्हाई डू आई वांट टू बी दिस इंडिपेंडेंट पर्सन, नॉट an independent woman or whatever, but मुझे क्यों करना है, क्योंकि I want a good quality of life for myself. I want to change the generation. ठीक है, completely. मैं मतलब बेहतर करना चाहती हूँ फ्यूचर में जो आने वाले हैं मेरी फैमिली में, उनको, उनकी जिंदगियों को. मे बी दैट, ठीक है, मे बी आई लव लीडिंग. सो मुझे अगर मैं मेहनत करूंगी तो फिर मुझे लीड करने का मौका मिलेगा. सो दैट इज माई वाई. सो दीज आर माई वाइज. सो आपके क्या वाइज हैं? सो व्हेन यू नो द वाइज, फिर आप आई थिंक फिर आप जो है ना, जो भी प्रॉब्लम्स है उनके साथ नेविगेट कर सकते हैं. अगेन जब हम 2 प्रोग्राम्स अभी बना रहे थे ना, तो उस टाइम पे भी ये बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि अच्छा ये इसको भी कंसिडर करें, इसको भी कंसिडर करें. तो क्या खवातीन टाइम निकाल के आएंगी वीकेंड पे? क्या खवातीन रेजिडेंशियल बूट कैंप में आएंगी? एंड आई अगेन हम वही हमारे बहुत नेचुरल हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही होती है. तो मैंने पूछा कि अगर कोई मर्द हजरात होते तो आप यही सवाल करते हैं, लेकिन नहीं, ये रियलिटी है ना. वो रियलिटी है, वो सिस्टम का पार्ट है, बट हु विल चेंज द सिस्टम? अगर मैं कहूंगी कि नहीं, taking that ownership to change the system. I want to go for this because this is for my development. But no, if we are becoming part of that system, we are like, okay, मैं तो कुछ नहीं कर सकती इस बारे में, just let it be. So that is going to remain like that. So I think you have to step up again. ठीक है. So हमारी जो जर्नी है, that's a tough one. I mean, there's no denying it, and I think सभी की होती है to some degree. All of us have to go through, regardless of whether you're a woman or a man or anybody else for that matter. The journey is always difficult because ऐसा नहीं है कि hurdles नहीं आएंगी. But to keep yourself motivated, I think the idea is that we are all looking out to bring about some kind of change in the world. We have a limited time on this planet. तो जितना भी टाइम हमें मिला है, we need to understand that we are coming from a certain position of privilege, and if you do have that privilege and if you are being given those platforms, अगर आपको वो मौके मिल रहे हैं और आप फिर भी उन मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, I think what it boils down to is that we are all getting very burnt out sometimes also. और अगर आप burnout के शिकार रहेंगे तो then आप दूसरों की मदद नहीं कर पाएंगे. So if you are okay, then you'll be able to help each other out. If you're not okay and you're not availing things, then you won't be able to help each other out. So I think with that, this Women's Day, let's just, if we really want to inspire inclusion, we need to make sure that we help ourselves first. Yes. And truly learn to rely on other people and ask for help if required. Because बहुत ज़्यादा time हम बस face saving में चले जाते हैं and we don't really ask for help. So I think it's okay to do that. And it's okay to be okay. Do not be okay also. Very easily this Thursday talk again आपने flip कर दिया. Has transgressed. Yes. But that was my plan since that was such a good the beginning. Yeah. But yes, all in all, inspire inclusion one step at a time, and please start with yourself only.